Hello and welcome to the online classes for grade 11. Now from our NCERT book of Computer Science, chapter number 5, Get Things Started with Python. In debugging, we are going to learn about runtime errors. Okay, what is a runtime error? How is it different from syntax error and logical error? So let us learn about it and see what it is, what happens in it. Okay, so a runtime error causes abnormal termination of program while it is executing. Now see, we have written a program and we are running the program. So while it is executing, that is just before the output is displayed, it stops. Okay, it causes an abnormal termination. Termination means stopping. Runtime error is when the statement is correct syntactically, but the interpreter cannot execute it. Now that is to say the syntax is correct. It is written in the proper methodology, but yet it cannot be executed. Why does this happen? Runtime errors do not appear until after the program starts running or executing. So when we start running and executing a program, only then, towards the ending, just before the output is displayed, the runtime errors suddenly stop the program. For example, we have a statement having division operation in the program. So now just think we have a question that we are to divide two numbers, okay, using a numerator and a denominator. By mistake, if the denominator entered is 0, then it will give a runtime error like division by 0. Now you see this is a runtime error. We know that division by 0, okay, if we are dividing 2 divided by 0, the answer is 2. So in a runtime error, if you have entered a no value, an empty value, okay, or maybe like a non-integer value or the value 0, it gives an abnormal termination with the error message saying division by 0. That is to say your syntax is correct, but yet your program will not be executed. There will be no result displayed. Let's look at an example. Look at this example, program 5.11, example of a program which generates a runtime error. Look at a runtime error here. We have number 1 as 10.0 and the second value we have input, we have used it as a string. Now what is a string value? When we have double quotation marks, okay? So a string value can be strings, that is alphabets or numbers or alphanumeric, but in quotation marks, okay? These double quotes here. So you see this is not acceptable. We cannot use this. We want to do a calculation. But for calculation we cannot make use of string. So if user inputs a string or a 0, it leads to runtime error. Okay? That is to say, देखो string क्या होता है? String होते हैं जब हम कोई alphabets words लिखते हैं या हम numbers लिखते हैं, लेकिन हम उन्हें इस तरह से इन double quotes में रख लेते हैं. तो जब हम डबल कोट्स में रख लेंगे या हम इसमें 0 की वैल्यू रखेंगे तो ये एग्जीक्यूशन पूरा नहीं होगा. ठीक है, इसमें फिर एक मैसेज आएगा दैट डिवीजन बाय 0 और मल्टीप्लिकेशन बाय 0 और दिस इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. इस तरह के एरर्स आते हैं. इनको हम कहते हैं रन टाइम एरर. रन टाइम क्यों है इनका नाम? क्योंकि जिस टाइम ये प्रोग्राम रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम ये एरर्स शो करते हैं एंड सडनली स्टॉप हो जाता है प्रोग्राम. ठीक है. सो टू गिव इट एन ओवरव्यू देखें, हमने 3 टाइप के एरर्स देखे हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर. सिंटैक्स एरर में जो हमारी राइटिंग होती है, अगर हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं तो वो प्रोग्राम रन नहीं होता है. ठीक है, वो स्टार्ट ही नहीं होता, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता. जो लॉजिकल एरर्स होते हैं उनमें हमारी जो कोडिंग होती है वो तो करेक्ट होती है, लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक आ जाती है जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होता है वो गलत होता है. मतलब प्रोग्राम रन भी करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, आउटपुट भी देगा, लेकिन गलत आउटपुट देगा. उससे हमें पता चलता है कि हाँ कोडिंग में कोई प्रॉब्लम है. एंड फाइनली जो रन टाइम एरर्स होते हैं, इनमें हम जब एरर होता है तो जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है, एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस टाइम रन टाइम एरर सडनली शो करता है. और वो क्यों शो करता है? अगर हम फॉर एग्जाम्पल डिवीजन बाय 0 करते हैं या नॉन इंटीजर वैल्यू करते हैं, ठीक है, नॉन इंटीजर जैसे कि हम स्ट्रिंग्स यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द एरर्स इन डिबगिंग.